See, today we will teach about the documents used in issue of material. Documents used in issue of material. Number of documents are normally used. Documents used in issue of material. Issue of material, already we have discussed the issue of material, particularly material issue is a vital chapter. Here you have to remember the different issues method. Already you know that is FIFO, LIFO, average method, different methods already we have discussed regarding this matter, FIFO method, LIFO method. So whenever we issue the material from stores to production department, the number of documents are used. These documents are to be maintained for the accounting point of view. These documents are to be prepared, because if you don't maintain the records, means required records, so it becomes difficult to analyze the records in future. Considering the degree of importance, different materials are supplied or issued to number of departments, and it is the duty of the storekeeper to maintain different records regarding this matter. That is why, so whenever we issue materials to number of processing units, accordingly you have to maintain different records. Now the question is, what are the documents, what are the records are to be used at the time of issuing material to the production department. Number one is your material requisition note. Next one is your material return note. Number 3 is your material transfer note. Number 4 is your bill of material. Number 5 is your material abstract. Material abstract note. So these are the documents normally used in issuing of material. First one is your material requisition note. Material requisition note, it means whenever production is going to be started, in such cases the head of the production department has to request the storekeeper to issue the materials required for the purpose of production. Remember this one. Production department is headed by foreman, and the foreman has to request the storekeeper to issue the required material for the purpose of production. So whatever request is given by the foreman to the storekeeper in a prescribed form, in a prescribed format, is known as material requisition note, and it is a formal record requested by the foreman to the storekeeper regarding the supply of material for the purpose of production. And it is the duty of the storekeeper to evaluate or to analyze the material requisition note, which contains details about the quantity, quality of materials required for the purpose of production, described or requested by the foreman. And if the
material requisition note is not received by the storekeeper, if the material requisition note, accordingly the quantity of the material, nature of the material is not requested by the foreman, the storekeeper cannot issue the material. It is the evidence. Material requisition note is an evidence which discloses or which reflects the quantity of material required by the production department. And whenever the storekeeper receives the material requisition note from the concerned processing unit by the foreman, accordingly the storekeeper issues the materials shown in the material requisition note to the concerned production department, and it is an authorized copy of issuing material by the storekeeper to the concerned production department. Either it is P1, P2, P3, means production department 1, production department 2, production department 3, etc. like this. So that is what material requisition note which must. Without material requisition note, it is not possible to issue material to the concerned department. And whenever the foreman issues a material requisition note to the storekeeper, means it is a request. It is a request by the foreman to the storekeeper. And the production manager, means you can say foreman also, the foreman has to mention the quantity of a material. Side by side, each and every material is maintained in the digital form, in a numeric form, alphanumeric form, which is known as code, material code. प्रत्येक material रोटे code number था. Then the foreman, means the foreman has to follow the materials required side by side its code number, quantity, केते परिमाण material दरकार सब गुडी को गोटे कर से मेंशन करिवे. Accordingly storekeeper देखिला परे जो मटेरियल तार कोड नंबर को मैच करी से मटेरियल से सप्लाई कर देबे. ताले एटा ही केवल स्टोर कीपर पाखरे ही मटेरियल रिक्विजिशन नोट केवल ताको ऑथराइज दे देबो जे हां जे मते एतिक मटेरियल अमुक डिपार्टमेंट पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सप्लाई करबा को अछि. एटा ही केवल ऑथराइजेशन दे देबो स्टोर कीपर जे पर्यंत अनलेस एंड अंटिल मटेरियल रिक्विजिशन इज रिसीव्ड, unless and until the material requisition is received, so it is not possible for a storekeeper to issue material to the concerned department for the purpose of production or processing. Material requisition is must. It is issue of material related documents. So first material requisition note already we have discussed in the issue of materials methods, problem solve करथि से तोन हम कहथि material requisition note का हम कहथि. And normally it is prepared in a triplicate. Material requisition copy note is prepared with 3 copies. 3टा कॉपी रे एटा तैयार करे से 3टा कॉपी डिफरेंट डिपार्टमेंट माने रखती. 3 कॉपी 3टा डिपार्टमेंट को जाय, लाइक यू कैन से स्टोर डिपार्टमेंट को जीवो, कस्टिंग डिपार्टमेंट को जीवो, गोटे कॉपी मते फोरमैन रखि पारंती ताकर ऑर्गेनाइजेशन हिसाब रे. तनो एटा मते तुमको 3टा कॉपी बनेबार अछि. 3टा कॉपी बना हो, 3टा कॉपी को डिफरेंट डिपार्टमेंट को फर्स्ट कॉपी टा रखा दिबो, के रखिबो सेकंड कॉपी को डिपार्टमेंट रखिबो, थर्ड कॉपी आउट डिपार्टमेंट रखिबो. तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट रो आवश्यकता अछि. ताने एटा ही हमको जणाइ देबो मटेरियल हम केते परिमाण इशू करिछे बा इशू करबा को जाउछे. तोंडी आको नजर रखी and the material requisition सेति के बळे कार्य करिवो. इट शुड बी साइंड बाय ऑथराइज्ड पर्सन. material requisition note normally आपको प्रिपेयर करते फोरमैन. तो फोरमैन जेतोले material requisition note तैयारी करी छाड़ीबे स्टोर कीपर को, it must be duly signed by the authorized person. Authorized person means departmental head. जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट मटेरियल दरकार कले से डिपार्टमेंटल हेड जे होंतु से प्रोडक्शन मैनेजर होंतु से फोरमैन ताकर सिग्नेचर दरकार. ऑथराइज्ड पर्सन ड्यूली साइन करथिबे, साइन कर पठाइथिबे. एवं कोन मटेरियल किनिया पे पड़िबो से बाबद रे कहली को मटेरियल जो सप्लाई करिया पे पड़िबो बा इशू करिया पे पड़िबो, से मटेरियल रो नेचर, तार केते क्वांटिटी, तार क्वालिटी मध्ये ही पारे, तार कोड नंबर, ऑल दिस details information should be provided by the foreman to the storekeeper. It is your material requisition note. So whenever material requisition note is received by the storekeeper, accordingly the storekeeper issues
the required material mentioned in the material requisition note supplied to the concerned storekeeper. Sorry, production center. Now, point number 2, material return note. Material return note, another document used in material issue. Material return note is a case whenever materials are supplied by the storekeeper to the production department. In such cases, it may arise. In such cases, it may arise excess of material may be supplied. Whenever excess of material is supplied, or the materials supplied by the storekeeper to the production department as per the requisition note may not be utilized by the concerned department. जेतिकी परिमाण मटेरियल रिक्विजिशन है स्टोर रू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाए से ड्यू पीरियड भितर हुए तो से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ताको कंप्लीट कंज्यूम न करि पारती यूज न करि पारती तो ड्यू पीरियड भितर जदि कंप्लीट न करि पाले एक्सेस मटेरियल सो सप्लाइड इज अगेन रिटर्न टू द स्टोर डिपार्टमेंट. बुझी पारले पिला माने आमे जेतिकी परिमाण रे रिक्विजिशन अनुसार मटेरियल स्टोर कीपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पठाई थिबो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ड्यू पीरियड भितर से मटेरियल को कंज्यूम करबा दरकार. जति कंज्यूम न करि पारिबे ताले से ड्यू पीरियड भितर जहा एक्सेस मटेरियल बळी पड़िबो एटा इमीडिएटली पुनी बैक करे ओटी ना स्टोर को पुनी स्टोरिंग करिया पे तले होइनेबर रिक्वायरमेंट अनुसार जतबेले ऑथराइजेशन पर्सन फोरमैन मटेरियल रिक्विजिशन नोट एगेंस्ट रे मटेरियल नै कि प्रोडक्शन करूछन जतबेले से रिटर्न करिवे इमीडिएटली पुनी गुटे फॉर्मेट पुनी गुटे डॉक्यूमेंट से माने फॉलो करती केते परिमाण मटेरियल हमें रिक्विजिशन करि नेइथिलु एवं केते परिमाण रे एक्सेस मटेरियल जहां हम पाखरे बळिला एटा इमीडिएटली ट्रांसफर हो पुनी स्टोरिंग कारण स्टोर जिनसटा मटेरियल हमको प्रॉपर कंडीशन रे हम रखिबा. तो व्हेनेवर द फोरमैन रिटर्न्स गुड्स whenever foreman returns such materials to the storekeeper, in such cases the foreman has to prepare another document which is known as material return note, which signifies how much quantity of material has been returned from production department to the storing department, requesting to keep the material in proper order, proper way in the store department, and signifying the causes of a return means because of excess in the supply or end of a particular period. See, केतोडे कारण पाई एटा मथ रिटर्न होता है. And the material return note also signifies the material requisition note. क्यों डेट रे आमे रिक्विजिशन हेतला केते परिमाण रे हेतला instant date, and side by side requisition note should be attached, number should be given so that for purpose of review. आमे को डेट रे मटेरियल इश्यू हेतला केउ इश्यू रो केते परिमाण मटेरियल को मटेरियल फेरि आसुची आर डेट नोट नंबर यार डेट ई मटेरियल रिटर्न नोट रे निश्चित भाव से फॉर्मेट रे मेंशन हो अमक डेट रे इश्यू करा जायतिबा मटेरियल को ई मटेरियल एक्सेस को हमें रिटर्न करू सो दैट हमें आ सहित टाई कर परिबा बा ताकू रिव्यू करिके कंपेयर कर परिबा फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिक पर्पस and to know exactly whether the materials has been issued or not, that will be signified by mentioning the material requisition note. आदर material return note हमें prepare करि पाइबा side by side जानि मध्य पाइबा प्रकृत material requisition हेतिला कि नाही को डेट रे केते नंबर नोट रे material issue हेतला जहा रिटर्न हे आसी आदर कोन भी जेतिक परिमाण material रिटर्न हुए एटा पुनी आसी तमर स्टोर रे प्लस हे छिबो. ऑलरेडी की बाबत हम पढ़ी सारछे एन मटेरियल इश्यू हम पढ़ी सारछे जो क्वेश्चन सॉल्व कला बेले मटेरियल रिटर्न जो हुए दुई प्रकार रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट रिटर्न टू सप्लायर पिले रिमेंबर मन पकाउ से क्लास हमने करिसे रिटर्न टू सप्लायर रिटर्न फ्रॉम स्टोर हेले आसीबो लोड आसी प्लस हे जो रिटर्न टू सप्लायर हेले माइनस हे जो. दिस इज ऑल अबाउट described format is there, predefined format is there, you have to follow, or the organization has to follow to prescribe the format to maintain the records. Material requisition note, material return note. Next one is your material transfer note. It is very occasional, very rare.
material transfer note is maintained whenever excess of material of particular department is transferred to other department. Particular department may not be is not possible to use, may not be able to use all the materials during the period. In such cases, the excess material is again it is transferred to other departments. Particularly, I mean department कहले पिलाटी बुझिबा पे कष्ट हो कारण different department रे different material use करा जाय थाय. We exactly एठी तो मेंशन करछि one job to another job. The materials issued by the storekeeper for a particular job. Whenever the materials is used in a particular job may not be consumed completely. जहाँ मटेरियल आम गोटे जॉब पर पठेचे कम्प्लीटली कंज्यूम कर पारे किसी मटेरियल बड़ी पड़ा. तो इन सच केसेस जो जॉब रे जिन मटेरियलटा बड़ी पड़ा से इमिडिएटली से मटेरियल को से रिटर्न न करके इमिडिएटली से इंटर ट्रांसफर कर दियंती गोटे जॉब आ गोटे जॉब ट्रांसफर कर दियंती. बिकॉज आ गोटे जॉब रे मतलब से मटेरियल कंज्यूम हुए तो से गोटे जॉब रो आ गोटे जॉब को ट्रांसफर करती. आ द्वारा यदि आम ट्रांसफर नोट मेंटेन न करवा ताहले we can't calculate the exact cost incurred in completing a particular job. That is why whatever excess material remain in a particular job is immediately it is transferred to another job and giving an information to the concerned department regarding this matter of transferring from this much quantity of material from one job to another job. As a result, it will be viable for the costing department side by other concerned department to evaluate total cost of material incurred in processing a particular or completing a particular job. That is why whenever the material is to be transferred, it should be accompanied by a authentic record, authentic document which is known as material transfer note. It is to be prepared, it is to be maintained this much quantity of material and its code number side by side other information is immediately informed to the concerned department regarding the transfer of excess material from a particular job to another job. Example, you can say it is job number 1, job number 2. In both cases, same type of material is being used. The material required for the job number 1 is supplied and according to the job is undertaken. Continue कर सारा पर जितनी की परिमाण मटेरियल इठी रिक्वायर होला सब ना की यूज कर सारा पर और किसी मटेरियल बड़ी पड़ला जो कि जॉब नंबर 1 रे जहां द्वारा जितनी की परिमाण जॉब नंबर रे मटेरियल बड़ी पड़ला सेटा इमीडिएटली पुनी स्टोर को आसीबो. स्टोर रे लोड हबो. स्टोर हला पर पुनी जॉब नंबर 2 पुनी से रिक्विजिशन करी तांको जॉब पाई मटेरियल लेबे आ द्वारा टिके टाइम कंज्यूम होइता टाइम लेता. तो सेति पाई ए जिंस को अवॉइड करिया पाई इमीडिएटली जॉब नंबर 1 रो आ मटेरियल स्टोर को आसेना कि स्टोर पुनी लेके इश्यू करा जाएगा. तो इमीडिएटली से माने कौन करती सेम टाइप ऑफ जॉब इज बीइंग अंडरटेकन बाय अनदर ग्रुप व्हिच इज नोन एज जॉब नंबर 2. Immediately the materials excess of material remains in the job number 1. Immediately it is transferred to job number 2. जहाँ द्वारा कौन करा जाए थे ना ये जो ट्रांसफर होला आ द्वारा जॉब नंबर 1 रे जे हेड थिबो से इमीडिएटली ये मटेरियल ट्रांसफर बाबद रे इंफॉर्मेशन कंसर्न डिपार्टमेंट दो तापे गोटे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करिवो द डॉक्यूमेंट व्हिच इज नोन एज मटेरियल ट्रांसफर नोट. As a result, the transfer note, whenever the transfer note is prepared or it is prepared, immediately it is informed to the costing department or other department regarding the transfer of material from a particular job to another job. As a result, accordingly, the total cost incurred in job number 1, job number 2 can be calculated easily, and so that actual material required for the job number 2 may not be supplied by the issuing departments, means store department. Only the materials supplied, excess materials supplied by the job number 1 and the rest material required will be issued by the storing department or stores
डिपार्टमेंट टू द जॉब नंबर जति परिमाण मटेरियल ट्रांसफर आउ आवश्यकता अनुसार रिक्वायरमेंट जहाँ आवश्यकता रेस्ट मटेरियल हमको सप्लाई कर दिया जाए। तो ये जो इंटरनल ट्रांसफर वाला जॉब नंबर 1 और जॉब नंबर 2 से केस रे हमको मटेरियल ट्रांसफर मोड प्रिपेयर करने में पड़ता है। नेक्स्ट वन इज योर बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल is another document which is very vital and remember this one, it is commonly known as BOM. Bill of material is otherwise known as bill of material is otherwise known as BOM. Short form bill of material. It is the list of material. It is a complete list of all materials required for the purpose of production. It is a complete list of materials required for the purpose of production. Means whenever production is undertaken, whatever different materials are required for the purpose of production is to be listed, is to be maintained in a particular sheet which is known as bill of material. That means to complete a particular job, whatever varieties of materials are required will be compiled, will be maintained by the foreman or maintained by the foreman, mentioning different materials and its quantity. केते परिमाण मटेरियल यूज होबो, को मटेरियल यूज होबो, को केस रे केते प्रोपोर्शन रे यूज करो, all these are to be maintained by the foreman. Accordingly, the required material maintained for the purpose of completely production, completely list of materials required for the production is maintained by the foreman, and accordingly this much quantity of material is to be issued by the storekeeper to the concerned job center. It is your BOM, bill of material. It signifies that to complete a particular work, to complete a particular job, how much quantities of material, different materials required for this purpose. From the very beginning, means before production, these are to be listed by the concerned head. Means foreman पूरा completely पूरा list देवे to complete a particular job, एक particular कामटा को करिया पाई, complete करिया पाई मते एई मटेरियल रो एति की परिमाण रो आवश्यकता completely list माने देवे। तो जहाँ द्वारा से लिस्ट को नजर रखिकरी सेति की परिमाण रो मटेरियल स्टोर रू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जीवो। फॉर एग्जांपल ये बिस्किट फैक्ट्री जो बिस्किट प्रोडक्शन होची, यदि आम गोटे 1 क्विंटल मीन्स 100 kg आम बिस्किट प्रोडक्शन करवा तो 100 kg गोटे पर्टिकुलर बिस्किट प्रोडक्शन करने हेले हमको कौन कौन मटेरियल्स आवश्यकता अच्छी, लाइक बिस्किट प्रोडक्शन करने डिफरेंट मटेरियल आवश्यकता अच्छी, लाइक फ्लोर, मैदा, सुगर, सॉल्ट, फ्लेवर जो सेंट दिया जाए तार फ्लेवर, अदर किछि इंग्रेडिएंट्स किछि थाए जमती आम कहि पारे प्रिजर्वेटिव आइटम, सोडियम बेंजोएट और अदर किछि प्रिजर्वेटिव आइटम जोटा कि आम प्रोडक्शन कला परे मध्य गोटे जिनिस को आम 6 मास वर्ष पर्यंत तार एक्सपायरी डेट फिक्स करता तार भितर आम तार कंज्यूम करि पारे, तार भितर जिनिसर क्वालिटी नष्ट हो नाही बा खराब हो नाही। तो से तार केते परिमाण प्रिजर्वेटिव आइटम जो दरकार सेटा केते परिमाण दरकार, दैट मीन्स 100 kg बिस्किट प्रोडक्शन करबे मैदार केते आवश्यकता अछि, चीनी रो आवश्यकता केते, लूण रो आवश्यकता केते अछि, प्रिजर्वेटिव आइटम केते अछि, फ्लेवर केते अछि, अदर इंग्रेडिएंट्स पूरा लिस्ट तैयार करा जाय। जति की परिमाण लिस्ट तैयार कराला सेटा हस्तम पाई बिल ऑफ मटेरियल। सेटा ही सेही रिक्वायरमेंट अनुसार स्टोर कीपर को ऑर्डर करा जाए, स्टोर कीपर डिफरेंट मटेरियल रो नजर को रखी सेति परिमाण सप्लाई करते, जहाँ कि रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन। जति परिमाण दरकार सेति सप्लाई हेले आमे प्रोडक्शन कंप्लीट कर परिबा, या तरह आमे वेस्टेज होबो नाही। जो बिल ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज योर मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट material are issued against requisition. Materials are issued against requisition by the foreman to the concerned department. And normally most of the cases it is seen that material issues, whenever material issues are done frequently,
frequently, so it is becomes difficult for the storekeeper to maintain the records how much quantities of different materials are consumed for different jobs. In such cases, the materials issued as it is issued frequently, so that it becomes difficult for the foreman to maintain the records. That is why all the materials required for the different jobs are maintained weekly, fortnightly, monthly. Different गोटे पीरियड पर एंडिंग रे इमीडिएटली एटा एनालाइज करा जाता है को मटेरियल केते परिमाण मटेरियल को जॉब सेंटर को सप्लाई हिची ताकू नजर रखी आमे गोटे पीरियड लेथाउ आइदर वीक एंडिंग और फोर्टनाइट पीरियड एंडिंग मींस 15 डेज पर किबा 1 मंथ पर एनालिसिस करा जाए एनालिसिस करके कंप्लीटली गोटे फाइनल शीट बना जाय थाए फाइनल शीट बना हवा द्वारा आम एक्चुअली जापर जो फ्रिक्वेंट इश्यू हो जोटि कि आम अपडेट रेकर्ड मेंटेन करने संभव हो न था से केस आम गोटे पीरियड एंडिंग रे सेटा वीकली हो पारे कि फोर्टनाइट हो पारे कि मंथली हो पारे इश्यू होला पर ताको एनालिसिस करके आम कंक्लूजन रे पहुंचता हाउ मच क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैज बीन इश्यूड टू डिफरेंट जॉब्स सो दैट इट विल बी इजियर फॉर द concerned department to evaluate the total cost incurred in producing a particular product, and side by side the material cost used, total material cost used in a particular job. In such cases, whatever analysis is made, whatever analysis is undertaken by the concerned department, and the document which is used for the purpose is known as material abstract. Remember this one, material abstract. The material abstract is not maintained immediately or frequently. Normally it is prepared at the end of a particular period. Quickly you may take a weekly period or a fortnight period or a monthly period depending upon the circumstances.